Hello and welcome to Prayag Career Institute's English class। यह वीडियो स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश के लिए है। इस वीडियो में दोबारा से मैं पिछली बार की तरह ही आपके लिए 15 क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ। ये 15 क्वेश्चंस सभी बच्चों को इंग्लिश बोलने में और इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करने में, टीचर्स को बच्चों को प्रैक्टिस कराने में, और जो बच्चे या जो लोग अपनी खुद ही सेल्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं उन सभी प्रैक्टिस करने वालों को ये क्वेश्चंस बहुत ही मदद करेंगे। यह क्वेश्चंस सिर्फ क्वेश्चंस नहीं है या बिना सोचे समझे सिर्फ आपको कुछ आंसर्स देने के लिए ये क्वेश्चंस नहीं सिर्फ लिख दिए गए हैं यहाँ। ये क्वेश्चंस बहुत सोच समझ के लिखे गए क्वेश्चंस हैं जिनकी प्रैक्टिस का मतलब होता है कि आपको 100% अनफेलिंगली आपको इंग्लिश बोलने की आदत आनी ही आनी है। कोई भी भाषा का प्रयोग करना अथवा सीखना सिर्फ एक आदत होता है, इससे बड़ी कोई बात नहीं होती है। तो इसलिए यदि आपको इंग्लिश नहीं आती है इसका मतलब है कि आपको इंग्लिश बोलने की आदत नहीं है। तो सिर्फ वह आपकी आदत को ग्रो करना है, और क्यों करना है, कैसे करना है, इन सेंटेंसेस को क्यों लिया गया है, ये एक लंबा विषय है और उस विषय को इस 10 मिनट या 15 मिनट या 20 मिनट के वीडियो में शेयर नहीं किया जा सकता। लेकिन यह तय है कि अगर इन क्वेश्चंस की इस तरह से प्रैक्टिस की जाती है तो आप निसंदेह विदाउट अनफेलिंगली यू लर्न इंग्लिश। यहाँ पर ये भी देख लीजिए कि जब इन क्वेश्चंस को यूज़ करना है तो जिस तरह के ये क्वेश्चंस हैं इस तरह से ऐसे ही कुछ और क्वेश्चंस भी बना करके प्रैक्टिस की जा सकती है। दूसरा, इन्हीं क्वेश्चंस के भी कई बार बहुत तरह से इनकी फॉर्म्स को चेंज करके और दूसरे नए नए क्वेश्चंस बहुत सारे बनाए जा सकते हैं। लेकिन इंग्लिश स्पीकिंग का मतलब है अंग्रेजी बोलना आपके मुंह से, तो वो सब चीज़ ये क्वेश्चंस आपको देते हैं। दूसरा, ये सिर्फ प्रैक्टिस ही नहीं देते हैं बल्कि ग्रामर की भी समझ आपको देंगे। तीसरा, इन सेंटेंसेस को कब, कहाँ, कैसे आपको यूज़ करना है, ये जो एक डीप ग्रामर है और एडवांस्ड ग्रामर है, वो एडवांस्ड ग्रामर ऑटोमेटिकली इस तरह से मैंने इनको डिज़ाइन किया है कि जो बहुत एडवांस्ड ग्रामर है जिसको काफ़ी लोग मतलब ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में जाकर के समझ पाते हैं और कई बार तो उसके बाद में समझ में आती है। वो सारी ग्रामर इसमें इस तरह से डिज़ाइन है कि वो सारी ग्रामर आपको अपने आप ही बिना ग्रामर की माथापच्ची किए हुए वो सारी ग्रामर आपको समझ में आ जाएगी। तो बहुत ही होपफुली, एंथुजियास्टिकली एंड बहुत इस तरह से ये प्लानिंग के साथ इन क्वेश्चंस को ऑर्गेनाइज किया गया है या कलेक्ट किया गया है या लिखा गया है। सिर्फ ऐसे ही कि कुछ भी लिख दें और आपको दे दें, ऐसी कोई कोशिश नहीं की गई है। तो इसलिए इन क्वेश्चंस की बहुत अच्छी प्रैक्टिस करें एंड हर क्वेश्चन को बहुत मन से बोलने की प्रैक्टिस करें। बोलना तो पड़ेगा ही। एंड टीचर्स के लिए भी यह मैसेज देना चाहूँगा कि आप जिस किसी स्कूल में भी हैं, अगर आपके द्वारा इन बच्चों को इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जाती है तो आपकी इससे बड़ी कोई, उस स्कूल के लिए इससे बड़ी कोई सेवा नहीं हो सकती। क्योंकि यह भी बात सच है कि ऐसे बहुत सारे स्कूल्स हैं, हालांकि कुछ कॉन्वेंट स्कूल्स हैं, कुछ इस तरह के हैं कि जिनका अब तो वो मोस्ट एडवांस्ड हैं, उनके पास टेक्निक्स बहुत हैं, तो वहाँ तो बच्चा जाते ही इंग्लिश बोलने ही लगता है। उन स्कूलों को अगर मैं छोड़ दूँ तो ऐसे स्कूलों की संख्या ज़्यादा है जिन स्कूलों में बुक्स भी लगाई जाती हैं, इंग्लिश स्पीकिंग के लिए टीचर्स भी रखे जाते हैं एंड और भी जो भी प्रयास हो सकते हैं वो प्रयास हो सकते हैं, लेकिन इसके बाद भी बच्चे अंग्रेजी नहीं बोलते हैं। तो ऐसे स्कूलों के लिए भी मेरी सलाह है कि अगर आप इस प्रोग्राम को फॉलो करते हैं
तो आपके स्कूल के बच्चे, आप जिस स्कूल से भी हों, आपके स्कूल के बच्चे ज़रूर इंग्लिश बोलना बहुत जल्दी स्टार्ट कर देंगे। अभी मैं इसको पर वीक मतलब वंस अ वीक दे रहा हूँ, लेकिन अगर आप अपने स्कूलों में स्टार्ट करते हैं और इसके रिज़ल्ट आप प्रूव करते हैं कि आप बच्चों को प्रैक्टिस करा रहे हैं, तो फिर इस प्रोग्राम को मैं रोज़ाना भी मैं स्टार्ट कर सकता हूं और रोज़ाना आपको ऐसे 15 सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कराने के लिए मैं आपको ऐसे सेंटेंसेस दे सकता हूं। तो मैं पूरा इसका कोर्स मेरे पास है, वो पूरा कोर्स, चूँकि अगर मैं पर वीक देता हूं तो इसमें कम से कम मुझे लगता है कि इतने काम में 1 साल लग जाएगा। लेकिन अगर यही कोर्स मैं पर वीक पर डे आपको देता हूं तो मैं समझता हूं कि 3-4 मंथ्स में ये काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस बच्चों की आ सकती है। तो अगर कुछ स्कूल्स या टीचर्स चाहते हैं कि वो अपने स्कूल में बच्चों को ऐसी प्रैक्टिस देना चाहते हैं, तो ज़रूर मुझे ईमेल करके या कमेंट्स में लिख करके बताएं, तो मैं इस प्रोग्राम को रोज़ाना के लिए भी स्टार्ट कर दूंगा। आइए प्रैक्टिस करते हैं इन क्वेश्चंस की। स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट थिंग्स डज अ मदर डू फॉर हर चिल्ड्रन। तो 1-2 क्वेश्चन के मैं भी आंसर दे करके देख लेता हूँ कि मुझे भी अंग्रेजी आती है कि नहीं आती है। तो इस तरह से आप करेंगे, व्हाट डज अ मदर डू फॉर हर चिल्ड्रन। तो अ मदर केयर्स हर चिल्ड्रन, अ मदर प्रोटेक्ट्स हर चिल्ड्रन, अ मदर कुक्स फूड फॉर हर चिल्ड्रन, a mother loves her children, a mother does everything for her children, a mother washes her children's clothes, a mother grows children, she gives them a lot of comfort all the times। इस तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस बोल सकते हो और एटलीस्ट अपने विद्यार्थियों से कम 5 सेंटेंसेस बोलने की प्रैक्टिस तो ज़रूर कराइए। दूसरा है, देन व्हाट थिंग्स डज अ फादर डू फॉर हिज चिल्ड्रन। अ फादर अर्न्स मनी। हालांकि मैं नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी बच्चों से बोलने सिखाने के लिए आपको थोड़ा सा एक गाइडेंस मिल जाए, इसलिए मैं इनके आंसर्स में बोल रहा हूँ। व्हाट थिंग्स डज अ फादर डू फॉर हिज चिल्ड्रन। अ फादर अर्न्स मनी फॉर हिज चिल्ड्रन, अ फादर गिव्स गाइडेंस टू हिज children, a father introduces the outer world to children, a father brings discipline in a children's life, or a father gives discipline to his children. Also, father gives fear to children, a father teaches the role of fear in children's life. So in this way a father does a lot of things in a children's life. A father takes children to school, a father arranges educational things for, or education in children's life, or educational things for children in this way. What things do your friends do for you? What things do your friends do for you or do with you? So my friends play with me, my friends walk with me, my friends compete with me, my friends go to school with me, my friends come back to home with me, my friends favor me, my friends always speak in favor of me, my friends give me a company, my friends give me courage to face the lot of difficult things in this way. About 5, my friends, what do your friends do for you? My friends help me, my friends share their things with me in this way. What do your friends, what things do your friends for you in this way? More sentences can be spoken. इसी तरह से, what things does your sister do at home? My sister helps me at my home, my sister helps my mother in her work, my sister helps father in his work, my sister fights with me, sometimes my sister sometimes competes with me in studies, my sister studies with me, sometimes my sister loves me, my sister goes to school with me, my sister works with me, my sister cooks food, my sister sometimes serves me food, my sister gives me sometimes my sister teaches me a lot of things in this way. About my sister, about your sister, about my sister, a lot of sentences can be spoken in this way.
what things does your brother do at home? What things does your brother do at home? So my brother helps me at my home. My brother guides me at home. My brother does my work at home. My brother guides me at home. My brother teaches me a lot of things at home. My brother behaves towards me as my friend. My brother reveals my secrets to my parents many times. So my brother fights with me. My brother plays with me. In this way, these sentences can be spoken about your brother. And then, what at least five things does water do in nature? What at least five things does water do in nature? तो वाटर नेचर में क्या करता है? तो वाटर नेचर में वाटर थिंग्स, तो वाटर वाटर quenches our thirst, to water supplies water to water gives life to plants, water provides facility, water helps us wash our utensils in the kitchen, water helps us cook food, water helps us clean a lot of things, water helps us wash our clothes, water gives life to plants, water flows in rivers, water fall on mountains as snow, water falls as rain, and water attracts rain. In this way, a lot of more other sentences can be spoken about water. What at least five things does water do in nature? And what at least five things does a teacher do in a society? What at least five things does a teacher do in a society? A teacher teaches children in a society. A teacher punishes children in a society. A teacher plays an ideal role in a society. A teacher studies a lot of subjects in a society. A teacher teaches many subjects in society. A teacher goes to school daily. A teacher teaches children's copies daily. In this way, a lot of sentences can be thought of. I know that all of you listening to me are more intelligent than I am, and so you can make a lot of sentences in this way. And then is what at least five things does. And then, what things do our enemies do with us? Of course, our enemies also have got a role in our lives. So what do our enemies do with us? So our enemies create fear in our minds. Our enemies create doubt in our minds. Our enemies pose, or our enemies make a challenge in our life. Our enemies always try to harm us in our life. Our enemies always try to cheat us in our lives. And in this way, our enemies always want to harm us, and they want to sometimes kidnap us. They are always jealous of us. So in this way, you can think of more sentences about enemies. What things do our enemies do with us? And what at least five things does a street dog do for a society? So what at least five things a street dog do for a society, or in the society? A street dog always stays awake in the night. A street dog does not sleep during the night or in the night. A street dog keeps wandering here and there in the night, and a street dog always barks at strangers in night. A street dog does not allow strangers to roam here and there in night, and a street dog creates terror in night for strangers. In this way, street dogs also protect our houses in night. So they take a challenge of night, and they protect our houses, and no enemies may come in night because of these street dogs. So this is the role of a street dog in the society. Means they are not useless animals, I mean to say. So in this way, a lot of things can be spoken about street dog too. And then there's next question is, what at least five things does a doctor do?
Then what at least 5 things does a doctor do? Then a doctor checks our body. A doctor checks our body temperature. A doctor prescribes us medicines. A doctor operates on our body. A doctor guides us how to live a healthy life. A doctor teaches us a lot of things. A doctor charges fees from us, and a doctor operates on our body, and a doctor finds out and diagnoses the diseases that may grow, or that are growing, or that is growing in our body. So a doctor also does a lot of things in our life. And in this way, what at least 5 things, what at least 5 things does. Now I have written so many things here. This many questions can be asked with the help of this one question. What at least 5 things does a soldier do? What at least 5 things does a barber do? What at least 5 things does a driver do? What at least 5 things does a tailor do? And what at least 5 things does a shopkeeper do? What at least 5 things does a lawyer do? What at least 5 things does a policeman do? What at least 5 things does a carpenter do? What at least 5 things does a mason do? What at least 5 things does a tutor do? What at least 5 things does a politician do? What at least 5 things does what does a priest do? In this way, these questions can also be asked, and for every question you need to speak at least 5 lines. If you're speaking 5 lines for each question, believe me, you are going to speak very, very fluent English. And I also gave you one video day before yesterday, I think. Day before yesterday, I gave you one video. In that video, a student is speaking these types of sentences, or a student is answering these questions. The questions that I gave you in the last video, a student is answering those questions in the same way as the student is answering those questions. At least that way you need to answer all the questions. इस तरह से सभी questions के answers आप लोगों को भी देने चाहिए. And the next question is, what at least 5 things happen when the sun rises? What at least 5 things happen when the sun rises? When the sun rises, people get up from their beds, people leave their beds, people come out of their houses, darkness disappears, the light comes out to our houses. Everywhere we see morning. So morning takes place. So morning happens everywhere when the sun rises. And the people go out of their houses. People start going to, or people start rushing to, or people go to their work. People go to their work. People and children go to their school when the sun rises. When the sun rises, children start going to their schools, so children go to their schools. And birds also come out of their nests. They also start flying here and there. The animals in jungle start moving, and so there are lots of things what happens when the sun rises. In this way, you can make your students speak a lot of sentences. And what at least 5 things happen when the sun sets? When the sun sets, what at least 5 things happen when the sun sets in the evening? All the people who have gone to their jobs come back to their houses. The people who come to their houses, people take dinners at their houses. People go to sleep in the night when the sun sets. Also in evening when the sun sets, people start worshipping, or people worship gods. Women wait for their men who have gone out. They wait in the evening when the sun sets. And the children wait for their parents or their fathers who have gone out. So this happens, and animals also start going back to their houses and to the place where they live or they stay in the night. And birds also start flying back to their nests.
when the sun sets, and some creeping animals all start creeping. During the day they keep sleeping, but during the night they come out, and they start their hunting. Owls come out in a night and they start flying, and they go on hunting. So in this way, about when the sun sets in the evening, what at least five things happen. These five things means in this way a lot of sentences can be spoken to respond or to answer this question. What at least five things does? What at least five things does? What at least five things does the sun do on the earth? What at least five things does the sun do on the earth? Earth gives light. Earth causes rain to happen. The sun gives light. The sun gives the ability to plants to complete their photosynthesis process. The sun causes water to fall. The sun causes air to move. The sun causes day and night on the earth. So what things does? There are lots of things that you need to show, you need to see, and you need to answer what things happen when, means what does a sun do. In this way a lot of sentences can be spoken, and you need to speak those sentences. What does the earth do? So the earth rotates or revolves around the sun. In this way a lot of sentences can be spoken. So this was the video, and I want you to do the practice. मैं चाहता हूँ कि इन 15 क्वेश्चंस की बहुत अच्छी प्रैक्टिस करें. अगर प्रैक्टिस करेंगे तो अभी तक कितने भी कुछ भी आप लोगों ने कोशिश की हो, या ऐसा कभी भी रहा हो कि इंग्लिश नहीं आई, बहुत सारा पढ़ने लिखने के बाद भी अंग्रेजी नहीं आई, लेकिन यह मेरा क्लेम है कि अगर आप इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ज़रूर अंग्रेजी आएगी. ऐसा कोई रीज़न नहीं है जिससे कि आप अंग्रेजी ना बोलने लगे. थैंक यू. बाय बाय.